Hi, let's start the live trading session. Let's just wait for few more people to join, then we'll just start. I'm sorry for the delay, guys. I was just trying to get connected, but I was not able to. Are we taking ETH? Yes, Saj, we are taking ETH today. Since our BTC TP was already hit and currently I'm trailing on it. So right now I have a setup on Ethereum. So let's see how it's gonna work. Let me just open a 5 minute time frame chart so that it's a bit easier for you guys to understand. I hope you took the BTC trade yesterday. ZEC, I am long on ZEC on my personal account. I did not share ZEC, but ZEC is going really well. It's around 70% in profit, and I'm trailing on it right now. Let's wait for a couple of more minutes, then we'll start. Also, guys, if you have any question, you can just simply write on the chat box, and it only allows you if you subscribe the channel, then only it will allow you to uh, write your question on the chat box. So do subscribe and like the video. uh, I am trying to come live on daily basis, especially on weekend. It's a bit difficult to come live on weekend, so do like and subscribe the channel so that we can start in a bit.
Hello Yusuf, hello. Hey everyone, I hope everyone is doing well. Uh, I have a each setup right now. It's weekend again, but I think we can have the Sunday pump today. So I am super bullish on BTC, super bullish on ETH, and on other altcoins, especially on ZEC. So I have a each setup right now, and I am just about to enter. Hi Sahaj, hello Jess, hi Andre, how are you doing? Yes, Zach. If you guys have any question, you can ask me. अभी तो I only have one setup because BTC may I'm already long from 7500. The TP is somewhere 72 500. I hope you guys enter that trade. रिवर कॉइन कैसा है?
यार देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज लॉन्ग ऑन रिवर, बट जब उसका टॉप लगा, सिंस देन आई एम शॉर्ट ऑन दैट। रिवर में अभी चेक कर लेता हूँ। वी हैव द ब्रेकआउट इन रिवर। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। We can consider breakout, we can consider this river as a breakout, but I have to see first because let me just open break river here. Let's see. Let's see the river. वैसे रिवर में लॉन्ग तो पॉसिबल है, बट आई वुड रेदर प्रेफर टू वेट।
We can consider this on live today, but let's just wait. Can we take the ETH setup to trade? Yes, I am already on long on ETH. Yes, you can. If we get the next candle opening, we need to wait. Let's wait for the confirmation to long on river. Okay, so right now I am entering ETH long. You can see the setup right now here. Let me shift it for you. We already had the breakout, the retest, the confirmation candle, and right now we are longing ETH. With the SL of 2050 and with the TP of 2182. Tau coin, Tau. I actually wanted to take Tau long, but I missed. To be very much honest, Tau मेरे से मिस हो गया. Tau मुझे लॉन्ग करना था. एंड आई एम जस्ट राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि अगर मेरे को हाई टाइम फ्रेम में थोड़ा सा रीटेस्ट मिल जाए 4 आवर या 1 डे में, सो दैट आई कैन एंटर टाउ. राइट नाउ नो, आई एम जस्ट वेटिंग. आई एम ऑलरेडी लॉन्ग ऑन BTC since from 7500. The TP is 72 500, and right now we are longing and we have already long ETH. XAG, XAG, XAG. XAG, XAG. Hmm. Let's see. यार लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो इट्स बेरिश. हाँ, I won't go long on XAG silver. I am like in lower time frame it's bearish. It's actually bearish to be exact, but अभी तो चलो currently the market is closed,
So we will discuss it someday later, but let's just focus on ETH and BTC right now. Baki river may I can see if we can just take long after the confirmation, but just waiting. Let's see if we get the volume today and we can exit as soon as possible, because कल it the swing हमने तो scalp सोच के लिया था, but वो swing बन गया lower time frame पे भी. So the volume was not there in the market, but let's see today अगर market में volume हो, so we can exit as soon as possible. I hope, because I think कि ये वाला ईद का setup it won't take too much long. We can see ETH around 2150, 2180 or maybe 2200 थोड़ी ही देर में. But let's see. All depends on BTC. No worries, Yusuf. And I'm glad कि crypto market तो at least 24/7 खुली होती है. Not like the US market or gold and silver या फिर Nasdaq. We can trade here anytime, anywhere. At least this is something that I really like about crypto. How many trades are active? Currently, two trades are active: BTC and ETH. Uh, and sorry, SUI also. BTC, ETH, and SUI. Right now, we have taken ETH, that is the recent one. BTC already TP hit. SUI is about to hit the TP, and ETH is that we have taken just right now, 5 minutes back. Let's see. Weekend hai, Sunday hai, so it might take some time, but from tomorrow onwards, I think scalps are really good. From Monday onwards, we can take scalp 15 minutes, 30 minutes के time frame में, 5 minutes के time frame में. SLTP for E-Trade, SL is 2050 and TP is 2180, 2182 here. So this is our SL. The next Fibonacci support, and this is our TP. The manual resistance that I have around 2182, 2185. Let's see. We can see ETH breaking to 2200 today. No worries, Prabhu. अच्छा गाइस, जिसने BTC लॉन्ग नहीं किया, दे कैन एंटर BTC लॉन्ग राइट नाउ. मेरी एंट्री थोड़ी सी नीचे है, but you can still enter BTC long right now because we already had a breakout and we had the retest and we have the confirmation candle.
So you guys can simply long on BTC from here. My entry is 7500. You can long from here with a TP of 72500. Again, I'm repeating, those who haven't taken the BTC long, they can enter right now with the TP of 72,500 with the SL of 72,470. Since I'm already long on BTC and my entry was 7,500, so you can take the SL as my entry. I know यहाँ से 7,500 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा as a scalp, but we can consider this because we are taking the TP of 72,500 from here. So that's completely okay if you guys enter here. Mine one is risk free, so I am just chilling with BTC trade क्योंकि मैं ऑलरेडी रिस्क फ्री हो चुका हूँ. माई एंट्री इज 7500, 470 somewhere, 7500. But you guys can still enter. I have pinned the TP and SL of ETH and BTC. You can just simply check. Those who have recently joined, please hit the like button and subscribe the channel so that it can motivate us and we can come live on daily basis. Do let me know if you have already entered BTC and ETH, or if you do not want to take trade on weekend, also let me know that also. देखते हैं how it goes. Share some of your experience beginner while learning crypto. Yeah, my experience, it was a bit tough for me because I like I used to work in corporate and I really wanted to be a trader. But whenever I used to open the chart, मेरे को समझ नहीं आता था. So my journey to trading to crypto was really a roller coaster ride for me because it was really tough for me because I wanted to learn something that was different from other people, so that I wanted to be unique. I wanted to be a trader, but whenever I used to open the charts, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था तो मैं बंद कर देता था. And I have scrolled everything on YouTube, trading, chart, crypto, stocks, Nifty and all, but मुझे कहीं से भी सक्सेस मिली नहीं because
सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद आई यूज टू वॉच सपोर्ट रेजिस्टेंस सीधा डायरेक्टली ICT. So that was really confusing for me. Then I had a really good close friend of mine, Bear. So Bear was the one who taught me step by step, and and I'm really great. I'm really grateful to him. And right now I am in a position I am teaching everyone. So now I can teach people step by step that how we can do crypto trading, how we can do other trading, how we can read the chart in a simplest way. So my experience was not good with trading, but right now I'm doing really great and I'm really grateful for that. So बहुत बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है. People have made it rocket science, but it is not a rocket science, to be very much honest. बहुत ही सिंपल चीज़ है. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द चार्ट्स, आपको ट्रेडिंग व्यू खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन सिंपली गो टू बाइनेंस और एनी एक्सचेंज चार्ट. आप सिंपली, आप अगर आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं भी है, देन ऑल्सो यू कैन सिंपली ओपन द चार्ट, 4 टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम. यू कैन सिंपली सेंस कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग, कि एक बारी आप चार्ट्स को रीड करना समझ जाओगे, एक बारी चार्ट को समझ जाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट सेज, सेंटीमेंट क्या कहता है, इट विल बी रियली ईजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि अब मार्केट कहाँ जाने वाली है. हाय ब्रो, अभी ऑल्ट सीजन का कोई पॉसिबिलिटी है? आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट भाई, बट देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन्स ऑल्ट सीजन एट दिस पॉइंट, बिकॉज मैंने कल भी यही बोला था, वी आर इन अ बेयर मार्केट. सो व्हेन यू आर इन अ बेयर मार्केट देर इज़ नो ऑल्ट सीजन, बिकॉज बिटकॉइन की ऑलरेडी इट वॉज, सी, सब बंदों ने ये बोला, आपके हर एक इन्फ्लुएंसर ने ये बोला, आई ऑल्सो फेल्ट कि ऑल्ट सीजन वॉज अबाउट टू कम. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि ये जो साइकिल थी, दैट वाज द साइकिल फॉर बिटकॉइन, एंड बिटकॉइन का ऑलरेडी टॉप लग चुका. सो दिस वाज द बिटकॉइन साइकिल. यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग ऑल्ट्स टू परफॉर्म, बट यहाँ पे BTC ने परफॉर्म किया. यहाँ पे ईथ ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, अपना एक टॉप हिट किया, एंड देन इट वेंट ऑल द वे टू 60, 65, 70. अभी हम जहाँ पे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑल्ट कॉइन की पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं है. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. हाँ, हो सकता है, इफ़ यू हैव अ थ्योरी ऑफ सुपर साइकिल, के हो सकता है ये एक्सटेंडेड साइकिल हो सकता है BTC अभी बॉटम लगा के दोबारा ऑल टाइम हाई बनाए, तो हो सकता है ऑल्ट्स थोड़ा परफॉर्म करें. बट अभी तो करेंटली ऑल्ट्स अपने पूरे ऑल टाइम लो पे ही चल रहे हैं. कोई भी ऑल्ट कॉइन आप उठा लो. Thank you. Yesterday BTC was a good trade. Thank you so much, Prab. I know I was expecting BTC to hit 71 500, 71 800, and जिस जो कि उसने हमारा टारगेट हिट किया, and now I am expecting 72 500, 73,000 to be exact. अगर मैं सच बोलूँ तो we can also see 74,000 zone, because मैं कुछ पैटर्न नोट कर रहा हूँ कुछ टाइम से. मार्केट मार्केट शोज अस द संडे पंप. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देख रहा हूँ आजकल मार्केट संडे को पंप करती है, देन मंडे को रिवर्सल आता है. तो नो ऑल्ट सीजन फॉर दिस सीजन, आई एम सॉरी.
again we just have to wait. अच्छा, also to let me know कि do you guys really like to trade on weekend, कि you guys only trade Monday to Friday, or you have specific date, or you do not trade on some special events जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच, FOMC या अनएम्प्लॉयमेंट रेट या कोई डेटा आता है तो you guys don't trade on that day, or you are always up for the trade? Because मैं तो हमेशा ही, I mean it's okay to take break, but I usually I'm always on trade on weekend, on special day, on events, on employment data, unemployment data. Yes, sir. 7 days. That's good. Being a trader, always find the opportunity and go long or short. You always have, market gives you opportunity every time. क्या स्पीच है, कब स्पीच है, कब क्या डेटा आना है. हाँ, there is a chance where it takes your SL, but there are also chance it gives you TP because manipulation उसी टाइम पे होती है. And when there is no manipulation in the market, like weekends, there is no point of taking trades. Or it like it takes a lot of time to either hit a TP or SL. Teach us about liquidity heat map. Yeah, liquidity heat map. I think my screen is visible to you guys. यार लिक्विडिटी हीट मैप में ज़्यादा कुछ तो नहीं है. लिक्विडिटी हीट मैप आप क्या रीड करना, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी लिखी हुई है. जो मेजर क्लस्टर होता है दैट इज दिस थिंग. लिक्विडिटी तो देखो, लिक्विड अब आई वॉन्ट बी लाइक ICT गाइस की वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी. देखो लिक्विडिटी तो इंटायर चार्ट पे होती है. ये रही लिक्विडिटी, ये रही लिक्विडिटी, ये रही लिक्विडिटी, पूरे चार्ट में ऑल दीज लाइन्स आर लिक्विडिटी. बट बस फर्क इतना है, ये मेजर क्लस्टर है 36 मिलियन, ये मेजर क्लस्टर है 36 मिलियन. यहाँ से आप जाके टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो. यू कैन सी द 12 आवर टाइम फ्रेम चार्ट कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ बैठी है. अब नाउ यू कैन सी दे, यहाँ पे अगर आप 12 आवर देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी बैठी है 18 मिलियन की. एंड उसके बाद लिक्विडिटी बैठी है सीधा 72,200. दैट इज समवेयर आर टारगेट 72,500 का. तो लिक्विडिटी हीट मैप में ज़्यादा कुछ नहीं है. लिक्विडिटी चार्ट में हर तरफ है, जहाँ भी मार्केट मूव कर रही है. देखो जहाँ पे आपकी एंट्री है हो सकता है वहाँ पे किसी का एसएल है, जहाँ पे आपका एसएल है हो सकता है वहाँ पे किसी की एंट्री है. तो लिक्विडिटी तो मार्केट जहाँ भी मूव करेगी, लिक्विडिटी तो मार्केट में हर जगह है. आपको चार्ट में लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी दिखेगी. बट जो मेजर क्लस्टर है दैट इज इम्पॉर्टेंट. आई एम नॉट लाइक ICT गाइस की वो स्वीप कर दिया, वहाँ से ये हाई बनाया, लो बनाया. आई कीप एवरीथिंग एज सिंपल एज पॉसिबल. ये लिक्विडिटी हीट मैप ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं ज़्यादा उसको देखता भी नहीं हूँ. बिकॉज दिस इज़ नॉट द ओनली फैक्टर वेयर द मार्केट ट्रेड्स. ये खाली फैक्टर नहीं है. ये आप इसको यू कैन कंसिडर दिस, आप वन ऑफ द फैक्टर इसको ले सकते हो कि हाँ मैं लिक्विडिटी हीट मैप, बट आई वॉन्ट कॉल इट अ लिक्विडिटी हीट मैप स्ट्रैटेजी कि आप इसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे हो. बिकॉज इसके अकॉर्डिंग अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे हो तो आई थिंक आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है. आप मुझे एक बात बताओ, इफ़ समथिंग दैट इज़ पॉसिबल टू सी, इफ समथिंग इज अवेलेबल टू एवरीवन, आप दे सकते हो उसको, मैं देख सकता हूँ उसको, तो क्या उसको मार्केट ऑपरेटर नहीं देख सकता? तो अगर आप इसको यू कॉल इट अ लिक्विडिटी हीट मैप स्ट्रैटेजी, तो अगर आप इसी के बेसिस पे अगर आप लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे हो तो व्हाट डू यू थिंक कि इसको ऑपरेटर्स नहीं देख सकते इफ इट इज़ अवेलेबल टू एवरीवन? उनके पास बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है. एंड इट्स अ कम्प्लीटली मिथ कि ऑपरेटर बैठ के देख रहे हैं कि आपका SL OTP कहाँ लग रहा है.
वो छोटे रिटेलर्स के साथ में ऐसा नहीं होता। वो अगर, हाँ, अगर आप बड़े लेवल पे जाओ तो हाँ, दैट इज़ पॉसिबल। मैं वो चीज़ नहीं कह सकता, बट हाँ, लिक्विडिटी तो मैप में, चार्ट में हर जगह है। सो आप इसको, यू कैन कंसिडर दिस वन ऑफ द फैक्टर्स, बट हाँ, यू हैव टू बिलीव ऑन दिस योर एनालिसिस। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। आपका, आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है। सी, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई बेट कि आपको शाम तक ईथ 2150 दिख ही जाएगा। आप अभी करंट प्राइस देख लो 2110, आपको शाम तक ईथ 2150 या 2170 तक दिख ही जाएगा। आई एम नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, बट दिस इज व्हाई आई ट्रस्ट माय एनालिसिस, एंड माय एनालिसिस सेज कि ईथ इज गोइंग टू बी बुलिश। Please use English. I am sorry, but I have to use English and Hindi both, because there are some people who want me to be to speak in Hindi, but to I'll try to speak in one language. Sir, I have seen your AMD. Can you please explain AMD? See, AMD is basically, the theory says, accumulation, manipulation, and distribution. So in accumulation, the market simply moves in the sideways. मार्केट कंसोलिडेट करती है, साइडवेज मूव करती है। यू डू नॉट सी द ब्रेकआउट, यू डू नॉट सी द ब्रेकडाउन। देन वी हैव द मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन डिपेंड करता है कि एएमडी जो है वो बेरिश है कि बुलिश है। जहाँ की भी है वो वहाँ की मैनिपुलेशन को हिट करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैनिपुलेशन है वो अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों टैप करती है, बिकॉज मार्केट टेक बोथ दी एसएल। वो लॉन्ग के एसएल भी टैप करती है, वो शॉर्ट के एसएल भी टैप करती है। देन वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जहां का भी एएमडी है, बेरिश है तो बेरिश, बुलिश है तो बुलिश। सिंपली रिटेल्स में जो रिटेलर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सो मोस्टली ये एक्सचेंजेस करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट, आई वॉन्ट से, आई वॉन्ट टेक एनी वंस नेम, बट कोई भी एक्सचेंज ले लीजिए, XYZ, वो बेसिकली क्या करता है, वो स्पॉट पे डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर्स को, एंड दे स्टार्ट सेलिंग इट। वहां से मार्केट नीचे आती है। सो AMD इज बेसिकली अकोमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज व्हाट द थ्योरी सेज, कि एकोमुलेशन में मार्केट साइडवेज मूव करेगी, मैनिपुलेशन में बोथ साइड की लिक्विडिटी को टैप करेगी या बोथ साइड के एसएल को टैप करेगी, एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर देगी टू द रिटेलर्स। डॉज, यार, डॉज, XRP, डॉज, इनका भाई टाइम गया। XRP तो चलो स्टिल, आई वुड कॉल इट अ स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मीम कॉइन्स, डॉज एंड ऑल, बट भाई वो नॉइस ही है खाली, वो बस हवाई बातें हैं। मीम कॉइन का एक टाइम आया था, ऑल्ट कॉइन्स भी एक टाइम पे एक साइकिल साइकिल में, बुल साइकिल में, लास्ट 2021 की बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड हर बंदे ने यही आई वुड से एक्सपेक्ट किया कि वो इस साइकिल में भी बहुत अच्छा करेंगे, एंड वहीं पे हम ट्रैप हो गए, बिकॉज ये साइकिल ऑल्ट कॉइन्स की साइकिल ही नहीं थी।
पिछली साइकिल 2021 की साइकिल में ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड देन वी थॉट कि इस साइकिल में भी ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग इट। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए जिन्होंने बाय किया, दे आर चिलिंग, दे आर हैप्पी, उनको दे डोंट केयर अबाउट द परफॉर्मेंस कि इस साइकिल में या अगले साइकिल में। इवेंचुअली वो लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने होल्ड किया है, तो वो 2 साल 5 साल में वो कर ही जाएगा कुछ ना कुछ। बट दोज हु स्टार्टेड बाइंग स्पॉट शॉर्ट टर्म के लिए कि इस साइकिल में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑल्ट कॉइन्स, आई एम सॉरी, आई फील सॉरी फॉर देम, बिकॉज ये साइकिल बीटीसी के लिए थी, एंड ये साइकिल में बीटीसी और ईथ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ईथ ने फिर भी अदर ऑल्ट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, बट यहाँ पे जो मेन साइकिल थी, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, दैट वाज बीटीसी। द मेन प्लेयर वाज बिटकॉइन, एंड उसने अपना टॉप बना दिया। तो डॉज वगैरह का तो यार टाइम चला गया। ईच शॉट है 2075 से बंद कर दो भैया, 2075 या 2075 या 2050 का तो मेरा एसएल है। ईथ एंटर बता दो यार, मेरी ईथ की एंट्री है 2007 की, 21 सॉरी 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 2107 की। मेरी ईथ लॉन्ग है 2107 से, एसएल है 2050 का, एनटीपी है 2182 की। Guys who are joining, please hit the like button and subscribe. Let's see BTC कहाँ पे है। Nice, about to hit 72,000। हमारे टीपी हिट होने ही वाला है। Let's see ETH। अच्छा, I also wanted to see river here ना। Nice, I can see the bullish pattern in river। We can consider this river, but let's just wait because BTC, ETH, SUI. So we have 3 positions right now active. So let it be like this. पहले हम BTC and ETH पे focus कर ले, then we will move forward to river। River में I will enter if we get the opportunity because we missed the entry। अब यहाँ से तो मैं रिवर पे लॉन्ग नहीं करूँगा, बट अगर कोई रीटेस्ट आता है देन वी विल सी। आई होप एवरी वन हैज़ एंटर्ड दी BTC लॉन्ग। मेरी 7500 से एंट्री चल रही है। फॉर द न्यू पीपल द एंट्री वॉज 71,500, दे आर स्टिल इन प्रॉफिट। Those who have recently taken BTC long, their entry should be 71,500 with a TP of 72,500 with the SL of 74,17, which is my entry। पैसा है तो बड़ी बड़ी।
So we have BTC at 72,000, just about to hit 72,000. Let's see, let's see. Let's see. Just one candle and we are at 72. What's your approach for studying a fresh setup? Yeah, I simply see the breakout and breakdown and retest and confirmation for a fresh setup. Sometimes I focus on the trending Fibonacci, the rejection and the support bounce, but there are also some other factors like volume and RSI. Um, but simply, I would say support and resistance with the breakout and breakdown with the confirmation. Nothing rocket science. But sometimes I have to see market in higher time frame and the lower time frame key. What does the weekly says? What does the uh, daily says? Then only I enter. SL बता दो. SL यार, I have already pinned the SL. That is 2050. The SL is 2050. The TP is 2180. Nice. 2120. Guys who have recently joined, please subscribe the channel and hit the like button.
Good morning, good morning. Yes, it's pumping, yes. Acha guys, those who have entered the trade, please do comment yes. Those who haven't taken, please comment no. That you are still not in the setup. I think we can build a short position between 73, 74 range. Yes, we can. But again, we have to see if we do not have the breakout, if we have the rejection from 73, 74 zone, we can short BTC from there till I would say 70 or 69. But again, we have to see. Let's see. Let's see.
Let's see where are each position. 2-1 2-1-1. Okay, it's fine. Okay, BTC pumping. Yes, BTC pumping. All we have to do is to wait. I know it's a bit frustrating. Weekend hai, it happens. This is charging. Just allow me 2 minutes, guys. What's the biggest trade you have taken in your life, and how long was it open? Why it was open for 6 months? The biggest trade of my life was open for 6 months, and that was for BTC. And us time pe I was also one of someone who used to take कि भाई trade signal दे दो, and I was this much mad कि I held that position for about 6 months, and that was a huge trade. And there was the point, that was the point I thought that I should start learning on my own. That was the biggest, I would say, the mistake of my life. uh, it was for 6 months, and that was BTC, and it was about, I guess, if I do not disclose the amount, that was, I would say, over $35,000, over $35,000. Bro, what's your biggest profit in a single day? Yeah, if I talk about my prime time, uh, in a single day, prime time when I used to trade aggressively, it was over 45,000 in a single day. But that was again the aggressive approach. I do not trade aggressively. I have stopped taking trades on my emotions. So now I simply believe on my technical analysis, not emotionally. So that 45,000, uh, that was not a big deal when I was being aggressive. So whenever you have higher profit like 300%, 400% ROI, it's simply, it's easy come and easy go.
if you are easily gaining 300% ROI, you can easily lose 400 or 500% ROI. So just remember, it's easy money. It's not good. Easy come, easy go. That is why this phrase fits perfectly in trading. जो easily आ सकता है वो easily जा भी सकता है. So always आप slow progress करो. That is the best approach. Aggressively नहीं जाना चाहिए. How did you learn and how did you formulate your strategy? Yeah, again, I would say I had a close friend of mine, Bior. So he taught me, he made me learn. He pushed me basically to learn. How did you formulate your strategies? Yeah, again, I would say I keep things simple. So I have a simplest approach of breakout and breakdown. That's it. No rocket science. Okay, let me see where our ETH position is. Okay, I think the Ethereum will take the lead from here. And we can see ETH above 22,300 if BTC hit 74.75 today. So all eyes on BTC. If we see BTC hitting 73.74, we can see ETH breaking 2200 zone. 2200, 2250. But one thing that I am sure about is ETH will hit 2150 today. Those who are new to the channel, please hit the subscribe button and like the video. I see people taking 1x leverage trades over spot. Why is that? Yeah, spot trading, yes, there are people who do. Leverage तो spot में one ही होता है. Leverage trading is best for futures. I don't know why people take 1x leverage on the spot because I don't do spot trading like I used to do. And whenever I feel कि जहाँ पे possible है then only, but majorly I do future trading. So spot trading से तो मैं I keep myself away because I believe spot is for your long term. So it's better not to uh, keep buying, selling. It's better to just buy and hold it for a longer period of time, like 3 years, 5 years.
It's a long term investment. It's better not to do spot trading um, when you have a bigger goal in your life. You can keep doing it, but again, there would be some times when you don't get the chance. You will just simply buy it or sell it, and you will just miss the chance. Let's suppose you buy a particular coin, you buy BTC. BTC drops below 59. You sell it. You sell your BTC. I do not want to uh, uh, keep holding of BTC from now onwards. And that was the point. You get the BTC rally. You see Bitcoin hitting $150,000. You see Bitcoin hitting $200,000. आप सोच रहे थे कि मैं BTC यहाँ आया, मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, देन आई विल जस्ट बाय इट अगेन. मैं यहाँ सेल करता हूँ, प्रॉफिट बुक करता हूँ, आई विल बाय इट अगेन. बट द मार्केट डजंट गिव यू द चांस. दैट विल बी द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ योर लाइफ if you keep doing this. I mean, short term ke liye it's okay. You do it, you take profit. But if you have a bigger goal, I would suggest ki keep hold your spot coins rather than taking trades on that. Oh, I see. Okay, so your question was, I see people taking 1x leverage trades over spot. अच्छा ठीक है. I'm sorry. I did not get your question. Okay. See, the thing here is, some people, they do not want to completely buy the coin and keep with themselves. They simply try to do the inter trade, कि एक दिन में enter हुए, एक दिन में exit हुए, and they prefer to take 1x leverage because sometimes big margin होता है, capital होता है, so they do not want any liquidation price. That is the reason. Yeah, don't do DCA at this point. If you want to do DCA, wait for some time. अभी DCA करने का फायदा नहीं है. Let's see. Is it still good for long?
You can still enter, but your SL would be bit big, I would say, because my entry is 7,500, and people who have recently taken the trade, their entry is 71,500. So there would not be much difference. So you can still enter here. Or if you talk about the Ethereum, then I would say my entry is 2107 with the SL of 2050 with a TP of 2180. So if you have the risk appetite, yes, you can enter. Which coin do you have an eye on currently in the market right now? BTC. Only BTC. BTC and ETH.
Yeah, logic behind ETH trade was we had a breakout in BTC in 1 hour and 4 hour time frame. Same with the Ethereum. So this was the simple logic behind ETH trade. So we had the breakout in 1 hour and 4 hour time frame, and BTC seems bullish to me, and so did ETH. Guys, please like and subscribe the channel. I'm just waiting 10 to 15 more minutes, then we will just simply wrap this up. And I'll give you guys update on my Telegram channel and on my X channel. The link is in description, so please join if you haven't joined our community yet.
Let's wait for 5 more minutes. I think we should end this live session, and the whatever the conclusion will be, I will be sharing it on my Telegram and my X account. So do follow us there also, if you haven't joined our community. And if you guys have any question, you can simply write it down to me on my Telegram. I will try to give you reply as soon as possible. So till then, bye bye, take care, and see you guys.